वुचने आमुत रातस क्या क्या सपदान क्या क्या ये करना ठीक बंद कर अब्दुल्ला मैं सोया हुआ नहीं मैं जाग रहा था हुज़ूर ने फरमाया नामल गुलय्यम निकिश शायद निंदर पेमुत ठीक मैं वो सो रही पत्रो हजरत आराम मैं वुच कित कन त्रो यम आराम कित कन त्रो डाफ बहुस हुशारी बंद कर ठीक तकरीबन नसफ रात हुजूर गए हुशार हुशार गए पत गोर मुबारक इतकन कर पत आसमान को नजर पत परख सूरह आल इमरान आखिरी आयत परख इन फी खल्क़ि समावात वल अर्द पत गए हुशार पत तशरीफ कोर वजू बे थो आब तैयार कर हुजूर आए वजू कर लाजक नमाज बित कर खट कर वजू बुत आज गोस पतन खड़ा ये सारा बिट बाय बिट पूरी रात जाग करके एक एक अमल को दिखाया। तो अल्लाह के नबी अलैहि की एक एक चीज महफूज है रिकॉर्ड में है अच्छा ना हदीस दुनिया के किसी आदम से मूसा ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी की बात कई महफूज नहीं है। इसलिए जब हम कहेंगे दुनिया में सच्चा मजहब सिर्फ एक वह है इस्लाम, दलील उसकी बहुत सारी उनमें से एक दलील ये है हदीस किसी के पास नहीं। यानी ऐसा अगर ईसाइयन बनो जनाब तो हिंदी दीन पर अगर का इंसान अमल बेस करुन ईसा अलैहिस्सलाम का अमल बन तो ही नहीं हजरत तिमुद का इरशाद फरमाए तो इस करो पर अमल। बाकी कौमों का भी मामला यही है, हर कौम से कहेंगे जनाब तुम्हारा जो मजहबी बड़ा रहनुमा है उस बड़े मजहबी रहनुमा की कोई एक बात हमें सुनाओ हम उस पर अमल करेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं है ही नहीं कोई क्या। हत्ता कि तुम किताब यमन तुमन निश्चय अड़े निश्चय वेद अड़े निश्चय बाइबल अड़े निश्चय ऐसा किसी के पास ओरिजिनल किताब नहीं है, सिर्फ इस्लाम के पास है। ये हदीस है, ये हदीस नबी से लेकर के सहाबे किराम से होते हुए जब मुहद्दिस तक हदीस पहुंचती है मज तमाम जम अफराद चते तमाम हालात रिकॉर्ड मसलन फर्ज कर गोडनुक हदीस पढ़ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला बयान करान यह हदीस से बोजनो में हुमैदी मोन वस्ताद हुमैदी हसा वारिया थोद मुहद्दिस तम यह हदीस बोजन पन्निस वस्तादस नश अमिस वस्तादस नाव सुफयान इब्न उयैना सुफयान इब्न उयैना वनान मे हसा वस्ताद सो वारिया थोद इंसान ओसमुत तमिस नाव याह्या इब्न सईद अंसारी अमिस हदीस बोजमुत याह्या इब्न सईद अंसारी हसा वारिया थोद इंसान तम हसा पन्निस वस्तादस हदीस बोजमुत अमिस नाव मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी हसा वनान मे हसा बोज यह हदीस पन्निस वस्तादस अमिस वस्तादस नाव अलकमा अलकमा बयान कर मे हसा बोज यह हदीस मस्जिद नबवी मज बस सत मज बिहित फारूक आजम मिंबरस पर खड़ा रोजित पद फारूक आजम बयान कर कि फरमाओ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। यानी गोया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस बयान कर्मुत इन्नमल आमालु बिन्नियात बोजने वाले फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला को यह हदीस बयान मिंबरस पठन बोजने वाले में अलकमा अलकमा यह हदीस बयान करा बोजने वाले में मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी हदीस बयान करा बोजने वाले याह्या इब्न सईद अंसारी याह्या इब्न सईद हदीस बयान करा बोजने वाले में सुफयान इब्न उयैना सुफयान उयैना हदीस बयान करा बोजने वाले में याह्या इब्न सईद अंसार याह्या हुमैदी हुमैदी इमाम बुखारी वस्ताद हुमैदी यह मक्का शरीफ में हदीस बयान करा बोजने वाले को इमाम बुखारी लोग किताब में हदीस। दुनिया की किसी कौम के पास ये सरमाया नहीं है। यम हदीस की किताब लिखना आम से तिमन हदीसन किताबन मज सारी किताबन में खसूसियात मगर सारी को थोड़ दर्ज इस किताब दिन आओ सो गो यह बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ से चूंकि तम इंसान लेसमज बुखारा को रोजन वोल अमिस शख्स नाव मोहम्मद मालिस नाव इस्माइल बड़ी बाबस नाव इब्राहिम इब्राहिम मोल तमिस नाव मुगीरा मुगीरा गोडनुक इंसान यम इस्लाम कबूल कोरमुत बुखारास मज मुगीरा बनो मुसलमान तत गवर्नर तम सिंस अथस पर कोर इस्लाम कबूल मुगीरा बनो मुसलमान पे नेचु इब्राहिम सह मुसलमान पे तसुन नेचु इस्माइल सह मुसलमान बे वारिया बोड़ मुहद्दिस इस्माइल जाव नेचु अमिस थोक नाव मोहम्मद दयिम नेचु तमिस थोक नाव अहमद इस्माइल गुजरोमुत तो मोहम्मद नुक बच्चे इमाम बुखारी बचपन में यतीम हो गया पे बचपन अमिस वारिया मुश्किलात आमित तम मुश्किलात मुश्किल ये कि अमिस गई लाइट इमाम बुखारी के बचपन में निगाहें खत्म हो गई लाइट चली गई वारिया ज्यादा परे मगर बचोस अमिस मोश पूरी रात वदान जाए नमाज पढ़न जाए नमाज भीग जाता था पूरी रात वो बैठ बैठ कर रोती थी या अल्लाह मैंने से बच्चस क्या बन इस बुछस ठीक पाचल बमार मैंने बच्चस क्या बनी अमिस ओन प्योमुत यानी वनाबीना हो गया है
رات رات بھر رو رو کر کے وہ والدہ جائے نماز کو بھیگا دیتی تھی، صبح سا جائے نماز تراون تاپس پتہ شامس بیٚیہِ یہے سلسلہ آسان خبر کتس ٹائمس یہ سلسلہ تھومت اک دہ اتھی سجدس من یا تہ تھکاوٹ یل گیس پور راتس نماز پہ تو پی اتی تو یتھے امس ڈکس گئی تو امس آو خوابس من حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ام محمد یا ام محمد او محمد سن ماج محمد امام بخاری ناو ٹھیک پتہ مختلف جملے یوان کتابن من خلاصہ تمیک یہ کہ خدائن کر چینس بچس لائٹ واپس پتہ کتابن من اڑین کتابن میں لکھت ام کور انتظار صبح تام بہ وچھ کیا بنس پوزیشن اڑین کتابن من لکھت تمس آو جوش وس تو گور تلن یہ بچہ یہ بوزے بچہ گو ہوشیار یتھے گو ام زور لائٹ دپن گوبرا یہ کیا دپن ہاں ژون امس آو اتہ موج گئی خوش دپن ہاں امس چھ لائٹ آمٕژ کورن نیبر یل کورن ژون دپن چلے ہیور کن دِ نظر ام تھی ہیور کن نظر دت اتہ آسمان دپن ہے آسمان ہو کہ تارا یہ گئی خوش او میانس بچس لائٹ آمٕژ واپس آئے ترون یہ بچہ بسترس مز سہ شونگ بے یہ پی بسترس سجدس مز اور مسلسل صبح تک آنسو بہاتی رہی خوشی میں وہ تمام ایس آنسو بہانا دعا میں اور اب اس کے بعد آنسو بہانا خوشی میں محمد ابن اسماعیل گو جی محمد اسماعیل رحم اللہ تعالی اس شوال کے رتس میں زامت سن اسمت 194 یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمہ عالم و رخصت گمت 140 وری اس میں گزریمت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آو یا دنیا مز ٹھیک سون امام اعظم رحمہ اللہ تعالی تم یا دنیا میں تمو تشریف اونمت سن 60 مز یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے 70 سال کے بعد اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی